Okay. We will be doing a sheet from past papers today. And before we start, if you want to discuss any problem in the previous task, you may ask. Any confusion in the previous task before we start this? No, No, sir. sir. Okay. Let's straight away jump to this. Before we start, I want you to recall something, the identical formulas. And those were a plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square. Second identity, a minus b whole square equals a square minus 2ab plus b square. Third identity is a square or a plus b into a minus b is a square minus b square. You can write it either way. So by looking at this question, we first know that we did three methods. Those were completing square, mid-term breaking, and quadratic formula. But looking at this question, we know that we are not able to apply this. So we are left with two options. The second is taking out common or applying the identity. So in this case, we see that there's nothing common, 4 or 2p. 9. So, but we Shabash. can find the 2p plus 3q, 2p plus That's right. 3q, and 2p minus 3q. That's right. That's right. So this is basically 2p square minus 3q whole square. And yes, then we write them as 2p minus 3q into 2p plus 3q. The order doesn't matter. You can switch that. Others, do you have any problem? We've applied the third identity. सही है बिल्कुल. थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो बेटे बता दें, अभी डिस्कस कर लेते हैं. Sir, why have you written 2p? Why have I written 2p? I needed to convert this into third identity in this form, a square minus b square. Example, if I have x square minus 36, may I write it as x square minus 6 square? Yes, sir. बेटे ठीक है. Another example, if I have 25 minus 16t square, may I write 5 square minus 4t square in order to Yes, sir. change the shape into third identity? So that's the reason why we've converted it into 2, because I needed whole square. In order, I can call it A and call this B. And do not forget to write your answer in the answer space. So that's 2p plus 3q. Moving on, when you see question number 2, now we see that if someone is texting, kindly speak up. I'm not able to see that. Okay, if we see at question number 2, we know that all three methods are not applicable here, Sir, even the common. identities. Common, Common shabash. is Shabash. So we take out common. This is 3x x square square. y. Yes. Any objection in 3x square y? No. No, So sir. this 2y square. 2 2y square y square minus minus 5x 5 5x. Yes. 5x. So that is your answer, and write your answer in the answer space. That is 2y square minus 5x. सर पास पेपर्स में बस इस तरह के आते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती. बेटे सब आते हैं. स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे. दिस इज अ शीट फ्रॉम P1. ओके सर. ठीक है. These questions are from 2018 and years before that. ओके सर. कल एक और शीट ये तो प्रैक्टिस आसान है करेंगे. सर. बिल्कुल ऐसे ही है. P1 is very easy. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए and you can easily score 75 out of 80. Sir, why 75? Why not 80? Oh my god.
5 सर अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि 80 लाएंगे. five marks are for careless mistakes. Okay. At this stage, we can say that, but when you'll like climb up Sir? grade 10, grade 11, you'll become more serious. जी बेटे. सर वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन 15 का तो एक्स क्यूब था. ठीक है, तो ठीक है, ठीक है. ये देखें, पहले वाले में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स क्यूब है. यस सर, इन दोनों में क्या कॉमन आता है? इन दोनों में सर एक्स. एक्स स्क्वायर. We have two x's in both of them. When we took that out, we are left with only one x with 5. यस सर, समझ आ गई मुझे. वो ठीक है. क्यूब में से 2 कट गया ना. जी, एग्जैक्टली. You took out 2 and you're left with 1x behind. इसी तरह से बेटे y में देखें. It was y cube with the first one and y in the second one. तो फर्स्ट वाले से एक y और सेकंड से भी एक आ गया, क्योंकि इससे बड़ा you can't get it. सर क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहले 3 कॉमन लेंगे. सर पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर बाकी तो 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर सर हम इनको अरेंज कर सकते हैं. 3y माइनस xt को एक साथ कर लें, 6x प्लस 18y को एक साथ कर लें. शाबाश. So first step is rearrange, because हमारे पास xy भी तो कॉमन आना चाहिए. So this is 6x minus xt plus 18y minus 3yt. Any objection? No sir. नो सर. This is No, just sir. the rearranging, and then we have x as common in the first one. This is 6 minus t, and then we have 3 in common. 3 and one more thing, 3y. 3y. So this is 6 minus t again. When we get these two brackets same, the point of satisfaction, x plus 3y and 6 minus t. x plus 3y and 6 minus t, and writing your answer in the answer space. And yes, ये the तो सर order हमने doesn't 6 matter. में किया था सर, 6 7 के क्वेश्चन है सर ये तो. बेटे ऐसे ही है. वी विल बी रिवाइजिंग. पेपर में आपके पास ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9 सब आता है. P1 is basically your mostly D1 and D2 and part of D3, and P2 is mostly D4 and D3. But yes, you can have any topic in P1 and any topic in P2. सर सारी Sir- D4 सारी आती हैं. All D4s and addendum. So what's that? पहले ये होता था D1, D2, D3, D4 और एक छोटी सी बुक होती थी सेपरेट. नाउ दिस बुक इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 4. अब देखें जहाँ चैप्टर्स खत्म होते हैं उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है Review exercise. बुक के एंड पे. नहीं, सारे चैप्टर्स जहाँ खत्म हो जाते हैं उसके बाद. Okay. तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े नहीं हैं. वील कवर दोज. सर पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है और पेपर 2 कितने मार्क्स का होता है? P1 is 80 marks, P2 is 100 marks, and P1 is 2 hours, P2 is 2.5 hours, P1 is no calculator, P2 calculator is allowed. सर ये तो सर आसान है सर, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. हमने तो 100 मार्क्स के किए हैं कोई पेपर्स. आसान है. All you need to do is practice. All you need to do is practice and avoid सर आपका confusion. ग्रेड आए थे सर मैथ्स में? बेटे मेरा 97 पे था. नाइस. इंग्लिश का नहीं पूछना. सर इंग्लिश सर में कितने आए थे? कितने आए थे? सीधा. सर मेरे भी सर भाई के सर तो इंग्लिश में ही बुरे आए थे. but what I realized is, किया मैं. yes, so and A levels. But what I've realized is English is as important as the other subjects are. सर What we do is we come. जी बेटे. सर हमें सर, उर्दू अब पे तो- ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी सर अब चाहिए. तो वो 1-2 साल से सर, सिलेबस उर्दू भी की सेम सर- करा रहे हैं. सारे साइंसेस भी उर्दू में कर देंगे सारा कुछ. बस इंग्लिश में स्टार्ट हो गया सर, स्टार्ट हो गया. 1 2 के बच्चों को लग गई हैं उर्दू की बुक्स. साइंसेस सर उर्दू में, वो बाकी चीजें उर्दू में. उन्होंने चलें उन्होंने इसमें सिंगल नेशनल करिकुलम लगा दिया. मतलब इस- बोर्ड की किताब है हर जगह. इसमें डिटेल में किसी दिन बात करेंगे. शीट 1, शीट 2, व्हेन वी आर डन दैट, क्वाड्रेटिक्स कंप्लीट है, फिर बात करेंगे. ठीक है. ओके सर. Okay, let me rearrange this as Plus 5x minus 12y minus 20. Any objection? It is just the rearranging, because I saw x and x as common
and then the number. So we can take out x and we are left with 3y plus 5. And in the next numbers, we 2 are 2. What about 4? 4 भी कर सकते Yes हैं sir, 4 भी. 4. ठीक है, 4 कॉमन आएगा बेटे, बिकॉज व्हेन यू टेक आउट 2 यू आर लेफ्ट विद 6 एंड 10. फिर दोबारा आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा. Oh yeah, got it. So this is 4, 3y plus 5. Two brackets same. X minus 4 times 3y plus 5. And the answer, सर ये तो मुफ्त में 2 मार्क्स दे रहे हैं सर. the answer space, yes, that is it. ऐसे ही है. यहाँ क्या करेंगे बेटे, बाकी बच्चे भी पार्ट लें, 2-3 ही बोल रहे हैं बस. सर 4 सर 4 से फैक्टराइज करेंगे. 4x square 4x square 4x square, yes. 4x square, good. Five. So we are left with 2, y minus 3x cube. 3x cube. Anyone else, any confusion? No, sir. No, sir. That's great. Moving on. Okay, before we start, most students, they score only 1 out of this. This is a 2-mark question. What do we do? सर 5 से Sir, फैक्टराइज 5 common. करेंगे. Sir, arrange. 5 common. So that is 1 minus 4r square 40 square. 30 square. Sir, What next? we will write सर हम 5 आइडेंटिटी लगाएंगे सर. bracket. 1 minus 4t square की. ठीक है, दूसरा बच्चा भी बोल रहा है ब्रैकेट वाला. बेटे आप क्या बोल रहे हैं? सर हम स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे 4t स्क्वायर से. और क्या बन जाएगा? सर 2t शाबाश. whole square. बोथ आर सेम. शाबाश. So, बेटे अगर किसी के ज़हन में नहीं आया था तो मुझे बता दें, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. ये जो दोनों बच्चों ने बताया, दे बोथ आर राइट. सो दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी एंड दैट मींस a plus b into a minus b. If any one of you thinks कि मेरे ज़हन में नहीं आया, we'll discuss it. तो ये समझ नहीं आया, समझा दे. ठीक है बेटे. फर्स्ट स्टेप इन ब्लू, इज दैट क्लियर? Yes sir. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिएगा, आई एम राइटिंग दोज एग्जांपल्स अगेन. x square minus 36, x square minus 6 square. Yes. When I write 25 minus 49 t square, may I write 5 square minus 70 whole square in order to make it look like the third identity? ठीक है. And when we have 1 minus 9x square, this is basically 1 square minus 3x square. When there is nothing left, you can't take common, and if those are perfect squares, convert it into third identity. Is it clear now? Okay sir. And the final answer is this in the writing space: 1 plus 2t times 1 minus 2t. सर अब कहते हैं ना कि 1 मार्क्स चले जाते हैं, वो मुझे समझ ही नहीं आता. मैंने रिकॉग्नाइज ही नहीं करना था कि 1 minus 2t 4t स्क्वायर था. जी, इसी चीज के लिए बेटे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस. अब देखिए, कंपेयर क्वेश्चन 6 एंड 7. तो 7 को देखते ही, इफ वी हैव डन समथिंग लाइक दिस इन क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4, so we can recall, mind will click in this way that either you have to rearrange or just take common, right? Yes sir. प्रैक्टिस इसी चीज का नाम है. प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में आएगा how to solve this question, how to handle this question. So when I look at these two, should I rearrange or just solve it? Just solve it sir. Solve it. Okay, y is common in this and 3 is common in this. So taking out y, I'm left with 3y minus 2x. And in the next two, may I take common as minus Minus 3, and I'm left with 3y minus 2x. Any objection? I've rearranged it before writing. I've wrote y first and x at a later stage. सर I have objection sir. ठीक है, पहले इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, देन आई रीअरेंज इन द नेक्स्ट स्टेप बचाने की कोशिश की थी. सो आई विल राइट 2x, दिस इज plus 3 minus 2x plus 3y.
ठीक है, in order to make these two brackets look like each other, directly rearrange कर दिया था. So this is why 3y minus 2x और मुझे -3 से हो रही थी कंफ्यूजन कि फिर तो ये +3 जी -9 बन जाएगा. जी 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 जी. So ये चेंज हो गया, ऑर्डर सेम हो गया. ठीक है, सर क्या Now- -3 नहीं आएगा? बेटे मल्टीप्लाई करके चेक करें, मल्टीप्लाई करें. 3 इंटू 3y क्या आता है? आंसर बोलें. 9y 9y आ रहा है. नाउ मल्टीप्लाई 3 विद -2 -6x सर -6. -6 ये -6 आ रहा है, तो हमारा Yes, आंसर ठीक है. नेगेटिव नहीं आएगा, दिस नो नीड. सो y प्लस 3 टाइम्स 3y माइनस 2x. इसको ट्राई करें रीअरेंज करके. लेट्स सी आंसर सेम आता है कि नहीं. शैल वी? सर वो 3 के पीछे माइनस लगेगा. नहीं प्लस बेटे, 3 के पीछे सर कुछ लोग माइनस दोबारा सर ऊपर वाला दोबारा मल्टीप्लाई 3 करके चेक कर लिया करें. मल्टीप्लाई करके चेक करें आंसर सेम आ रहा है कि नहीं. 3 इंटू -2 व्हाट डू यू गेट? सर रीचेक करें हम पेपर में बार इसको, हर -6 क्वेश्चन को. बेटे आफ्टर you've completed your paper, if you're left with 6-7 minutes, so yes, you have to recheck. छोटी छोटी गलती मिल जाती हैं. So are we getting -6? 3 into -2 and then 3 into 3 we're getting 9, so there's no need for the negative sign. ठीक है. यस सर. Now look at this. I'm rearranging it. 3y square plus 9y and then minus 2xy and minus 6x, and taking out common. This is 3y. I'm left with y plus 3 and taking out common. This is minus 2x. This is y plus 3. Again, those brackets are same. So 3y minus 2x into y plus 3. So either you rearrange or you don't, you get the same answers. And writing the answer in the answer space like this. Shall we move on? यस सर. Yes, sir. When we look at question number 8 and compare it with 7, does it look like that half of the question is already solved? सर वो Yes, sir. मिड टर्म ब्रेकिंग वाले जो आखिरी स्टेप होते हैं वो करेंगे सर. सर हम इसको माइनस कर देंगे सर. q -3 एंड फिर यही हो जाएगा -2 शाबाश. प्लस. जी सर साइंस Shabash. Because p minus 2 and 2 minus p are not same. And yes, तो beta 3 होगा midterm उसके पीछे breaking. माइनस लगा देंगे ना सर. Shabash, that's right. When you need to change signs, you take negative as common. So minus 2p. And when we take negative as common, -3, this signs change. This is -2 now and this is plus p now. And then a rearranging part, this is q p minus 2 minus 3 p minus 2. Now we have these two brackets same. Just write the answers. Q minus 3 times p minus 2. Any objection? नो सर. नो So, सर. q सर minus एक माइनस सर 2 मार्क्स का था. p minus 2g. जो माइनस नहीं लगाएंगे उनका आंसर ही ठीक नहीं आएगा, कॉमन ही नहीं आएगा. कुछ बच्चे कर जाते हैं गलती से, दे राइट 3q plus 3 into p minus 2, वो जीरो हो जाएगा. You have to recognize that these two brackets are not same. First, you have to convert them. So 1 mark was for taking negative as common, and the other is the completion, the simplification. ओके. Okay. Factorize completely. सर आपको असाइनमेंट भी डाल दिया करें सर, काफी टाइम होता है. सर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई. जी बेटे मैं और ऐड कर divide. दूंगा. The सर sole purpose सर ये अब was. तक सर ये अब तक एक्सरसाइज 1D ही चल रही है. नहीं बेटे, टेक 3 कॉमन. ये पास पेपर की शीट है. 1D हमने वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने थे, वहां तक कर लिए हैं. ओके सर. कल एक और पास पेपर की शीट प्रैक्टिस करेंगे. देखें, यू आर फीलिंग गुड. कुछ बच्चों के रिस्पॉन्सेस से पता चल रहा है कि ये Yes, तो sir. आसान है. सो नाउ टेकिंग आउट कॉमन. तो सर आप ये शेयर कर देंगे जी, प्रैक्टिस ये के भी. लिए, इस पे जी, कर ये कर लेंगे प्रैक्टिस. जी 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 जी. 3 3 a b A ए बी. B and we are left with
4a square. A 4a A A minus B 4 minus 5 15B. minus 5 minus Yes. 5 minus b square. B B square. square. So this is 3AB 4A minus 5B square. बेटे बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, नहीं कर रहे, 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं. Try this. So we'll take 5a common. 5A common, and we're left with 5a 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 5 minus A minus a minus 1. minus 1. minus 1. Anything else we can do with this? no No sir. sir. Nothing. No, So sir. this is 5A times 5A minus 1. Moving on. What does it look like? Sir, Sir, it it looks looks like like start third set identity. second identity, third Uh, Third identity. identity. third identity. So third identity is something like this. Yes, sir. Yes, What sir. do So we we write? will Yes, write sir. 3B, 9b. 3B 3B, So and 3B sir, and 4. 4. 4. But it's not 9B. Be careful. You have to take square of both the numbers. So Okay sir. first number in minus minus 4 second plus second plus सर first. पहले माइनस लिख दें बाद में माइनस लिख दें इतना फर्क तो नहीं पड़ता ना. No issues. No issues. A plus B into A minus B. No issues. Both are correct. किसी भी ऑर्डर में आप सॉल्व कर दें. So 3B plus 4 into 3B minus 4. But it is important that negative sign stays with 4. अभी ये नंबर देखें इसको कैसे करेंगे. सर पहले 2 कॉमन ले लेते हैं. Hint is given in this sheet but won't be given in exam. Okay. 2 कॉमन ले लें कैसे. सर वैसे तो 2 भी कॉमन लिया जा सकता है. सर कुछ स्क्वायर है सर, नहीं ले सकते सर. स्क्वायर 4 है भी नहीं ले ले जा सकते हैं 4. बेटे स्क्वायर है. Third identity लगा दो बस. Third identity. There is already, we can see this square. So third identity is a square minus b square is a plus b into a minus b. What is 102 Oh, plus right. 98? 102 plus 98 is Sir, 200. 200. 200. And 102 minus 98 is 4 4. So you get 800. 800. That's your answer. This was something सर from P1. G. सर थर्ड आइडेंटिटी मतलब वो आइडेंटिटीज लगानी है इसमें. A G. minus B A- plus A plus A- B. Yes, a square minus b square in this case. ओके लगा फर्स्ट भी सकते हैं. लगा के दिखाऊं. लगाने से. देखें 102 square minus 98 square. If I write it like this, 100 plus 2 whole square minus 100 minus 2 whole square. Any objection? No, sir. So this is third entry. This is this first one. This is nothing. I'm just showing you that you can also do it this way. But obviously, the first method is most accurate and most reliable. You've completed it in 3 steps. सिर्फ ये solve करके दिखा रहे हैं. Whatever you do, you'll get the same answer. And by practice, you know that what you have to choose. So in this case, this is a plus b whole square. That would be a square plus 2ab plus b square minus, in second one, this is a square minus 2ab plus b square, right? I'm Yes, sir. not solving this 100 square as 10,000 because I know that this positive 100 square will be cancelled out with the negative one. So 100 square, and this is 400 plus 4, and that is minus 100 square. Again, this was 400 and minus plus 400, and that is minus 4. And when we see those as same, may I cancel out this positive 100 square with negative? And This minus 4. positive 4 with Yes. negative, and the 800. answer is again 800.
So the choice is yours. Obviously, you will choose the first method because of the space, writing space, and the marks as well. Sir, a question. जी बेटे पूछें. Sir, if it isn't mentioned by using formula, can we just simply do 102 square This answer? will this won't be mentioned in exam. This was just the worksheet, so this is a tip. And yes, if you will do it like 102 times 102, obviously that would be very lengthy. Then 98 times 98, and then you will subtract these two. This is P1. You won't have your calculators with you. So this is something lengthy. This will take time, and there are chances of error. Again, I'm saying that this is why we practice. Your mind will automatically click that what you have to do. I'm going back to the first question just to show you. Sir, I have a question. But I'll answer that. In the first question, we clicked that we'll use identity. Second question, taking out common. Third question, rearranging and taking common. Fourth, rearranging and taking common. Your mind is telling you because you've done something like this. Fifth question, taking out common. There's no doubt you will never apply an identity. You will never apply quadratic formula. Fifth question, taking out common. Taking out, rearranging and making brackets. Rearranging, making brackets. Ninth question, taking out common. 10th, taking out common. 11th, very clear that it is identity. So in exam, yes, your mind will just click because you've practiced it. जी बेटे आप क्या पूछ रहे हैं? सर मेरा सवाल है कि 10 ये जो क्वेश्चन है, अगर इसमें माइनस की जगह प्लस होता तो फिर हम फिर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं. नहीं, फिर कुछ भी नहीं लगेगा. ये देखें. If this is 102 square plus 98 square, then you have no choice but to multiply them because ये identity है ही नहीं. Either it is a plus b whole square, ये whole square नहीं है. A minus b whole square, ये whole square नहीं है. A square minus b square, this is not the case in this way. अब सर हम आपको उसको multiply करना है. सर हम उसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते? 102 प्लस 98 होल स्क्वायर. बिल्कुल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. Yes. Now you are converting it in one of the identities. ठीक है. नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू वन ऑफ दिस आइडेंटिटीज. ये आपने फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. यस, तो माइनस होता तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता, लेकिन प्लस है तो आपने इसको कन्वर्ट किया. अब इसका आंसर कुछ और आएगा, नॉट 800. ठीक है. ठीक है सर. और अब ये एक नंबर का नहीं होगा. दिस वाज 1 मार्क. 1 मार्क फॉर these 3 steps. ठीक है, इट इज जस्टिफाइड. लेकिन जब वो प्लस आ जाएगा तो डेफिनेटली ये एक नंबर का नहीं होगा. ठीक है बेटे. एनी कंफ्यूजन? टुमारो विल कम अप विद अनदर शीट. वो प्रैक्टिस करेंगे. और इफ इट इज अ गो तो हम इंडिसेस पे चले जाएंगे. इफ देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स वी हैव फ्राइडे, और नहीं है तो कर लेंगे. और एक छोटी सी शीट बेटे, मे बी दिस सेम शीट और समथिंग एल्स अपलोड करूंगा. एंड नॉट एवरी वन ऑफ यू हैव डन द प्रीवियस वन. एक बच्चे ने कहा टाइम होता है, दैट इज़ वेरी गुड. सो पहली शीट ही कंप्लीट नहीं की तो दूसरी भी डाल दूं सर काइंडली. दोनों, सर आप एक फाइल के अंदर दो अपलोड कर देंगे तो सर वो कर लेंगे. लुक इनटू दैट. वो बेटे वो सेपरेट है, वो बुक से है. एंड उसकी फिर डेट चेंज नहीं होगी. व्हेन समवन आस्क्स अगर बीम्स पे ऐड होने असाइनमेंट के मार्क्स तो काइंडली डू दैट. वरना मेरे लिए तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा. मैं सिर्फ लिखूंगा नो सबमिशन और 0 मार्क्स. क्या ख्याल है? सर आप ये बस ठीक है लास्ट में अपलोड. जी बेटे, ये अपलोड हो जाएगी. एंड काइंडली कंप्लीट दैट. जिन बच्चों का रहता है वो टास्क कंप्लीट कर लें. सर कल तो ग्रुप 2 ने आना है स्कूल थर्सडे.